So we are doing Act 2, Scene 1. You have the notes. Let us read it from the notes. And very simple English it is. And then we will do next 2 pages. Fine. So in that way, you know that reference to context will be there. So you should know the meaning in the detail. That is why we are reading them again and again. Fine. So it is notes में लिखा है Act 2 Scene 1 another part of the island. Enter Alonso, who all are present in the scene. ये question आता है. Enter Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo, Adrian, Francisco, and others. Gonzalo to Alonso. I request you to be cheerful, sir. You have a cause to be cheerful. In fact, all of us have reason to feel cheerful because our escape from death is a greater gain than the loss we have suffered. The cause of our suffering is not something rare in human life, uncommon. A tragedy of this kind occurs every day in the life of some sailor's wife or in the life of the owner of some merchant ship or in the life of a merchant. But our survival is indeed a miracle. It is something most unusual because very few people caught in a tempest escape death. Therefore, good sir, use your wisdom and compare our gain with our loss. Alonso says, I request you to keep silent. Sebastian, अब वो बेटा privately Antonio से बोलता है, these words of comfort are most unwelcome to the king as cold porridge is to a man. जैसे वो ठंडा दलिया नहीं अच्छा लगता. Antonio privately to Sebastian, but Gonzalo, who is his comforter, will not leave him alone. चुप होने वाला नहीं है ये. Sebastian फिर उसको privately बोलता है, see, this man is preparing to speak more words, just as a man winds his watch, which then begins to tick. So he is sharpening his wit to speak. That is thinking power, reasoning. वो last class में हमने करा था. Gonzalo कहता है, King says, sir, Sebastian, he has spoken one word and now you may wait for the words which will follow. एक बोल दिया और अब शुरू हो जाएगा बोलना. Gonzalo फिर बोलता है, if a man treats every misfortune as if it were a guest, then what comes to that man is $1. तो बेटा मैंने ब्रैकेट में डॉलर का मीनिंग लिखा है ना, द पेमेंट फॉर हैविंग ट्रीटेड द गेस्ट हॉस्पिटेबली. इंडीड डॉलर मिलेगा उसको. बेटा डॉलर मतलब ग्रीफ comes to him. Your statement contained greater wisdom than you intended. Intended मतलब you thought. आपने सोचा उससे ज्यादा आपने इंटेलिजेंट बात करी है. Sebastian कहता है, no, you have interpreted it more wisely than I meant you to do. जितना मैंने सोचा और बोला उससे ज्यादा तुमने इसको समझ लिया. Gonzalo, therefore, my lord, it is a shame that he is so talkative and needlessly his tongue is wagging, shaking. Alonso बोलता है, बेटा खुद भी बोलता है Gonzalo को, I request you to stop bothering me, yeah, troubling me. Well, I have finished, but still, this man will surely not stop talking. Come, let us bet who will start talking first, Gonzalo or Adrian. I shall bet on the old fellow. मैं शर्त लगाता हूँ Gonzalo पहले बोलेगा. And I say that the young fellow will be the first to talk. Antonio बोलता है. I accept the bet. What is it that the winner of the bet will get? The winner should hear the loser bursting into a laugh. हारने वाले को हंसना पड़ेगा. Done. Though this island seems to be uninhabited. बेटा एड्रियन ने बोल दिया. Sebastian bursting into a laugh हंसता है और बोलता है, I have lost the bet and I have laughed to admit my defeat. एड्रियन बोलता ही जा रहा है, वो तो इन दोनों की बात कोई सुन नहीं रहा. एंटोनियो सेबेस्टियन एक दूसरे से बात कर रहे हैं. Without humans and out of the reach of mankind. Yet, फिर भी यहाँ कोई भी नहीं रहता, फिर भी ये क्यों अच्छा लग रहा है तुमको? He will be continuing. एंटोनियो बोलते हैं, अभी बोलेगा, वेट कर, अभी बोलेगा. Yet this island must be mysterious, mild and loving from the climatic point of view. Temperance का मतलब climate. Temperance was a lovely girl. वो बेटा कहीं की बात कहीं जोड़ रहे हैं ये बताने के लिए कि तुम लोग सेंसलेस बात कर रहे हो.
Yes, she was delicate and refined, and Adrian has spoken of her like a learned man. और क्या इसने जवाब दिया है यहाँ पर उसको? The air blows upon us most gently and soothingly. Yes, as if it had lungs exhaling foul breath. Smell अच्छी कहाँ आ रही है? ऐसी गंदी वाली तो smell आ रही है. एंटोनियो बोलते हैं, or it seems it comes from a tract of foul marshy area. दलदल है, कीचड़ है, उसमें से आ रही है शायद. Everything on this island is favorable and essential to life. गोंजालो बोलता है हर जरूरी चीज यहाँ है. एंटोनियो, yes you are right, but there is no means of living. Means of living का मतलब method of living. There is nothing or very little of the means of life here. सेबेस्टियन कहता है. गोंजालो बेटा पॉजिटिव देखने वाला बंदा. How luxuriant and fresh is the growth of grass here. Look how green. Antonio, indeed the ground is yellow colored. कहाँ पीला पीला तो दिख रहा है. It has a touch of greenness in it. सेबेस्टियन बोलते हैं नहीं, उसके बीच में थोड़ा थोड़ा हरा है ना. Antonio, this fellow has a keen observation, strong observation power है. Yes, but one thing which completely escapes his observation is the reality. Observation power बहुत अच्छी है पर हकीकत नहीं देखता है. But the unique quality of this island, it is almost incredible, unbelievable island. So beta Gonzalo is in mood of appreciating the island. Now come to page number 53 and it is line number 54. Sebastian says, no, he doth but mistake the truth totally. Truth का मतलब हो गया, the reality he is not looking. गोंजालो अपने उसमें बोलता जा रहा है, but the rarity of it is. बेटा rarity is the uniqueness. It मतलब island की, which is indeed almost beyond credit. Credit means belief. यकीन भी नहीं हो रहा है. Sebastian, as many vouched rarities are. बेटा vouched का मतलब guaranteed. Rarities का मतलब हो गया बेटा, जैसे बोलते हैं ना, to be real, unique. सेबेस्टियन टोंट कर रहा है, कहता है हाँ इतनी सारी गारंटीड अनयूजुअल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं यहाँ पर. गोंजालो, अब बेटा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें गोंजालो बता रहे हैं, यहाँ कौन सी इनक्रेडिबल चीजें हैं. दैट आर गारमेंट्स बीइंग एज दे वर ड्रेंच्ड इन द सी. समुद्र में हमारे ये कपड़े भीग गए थे. होल्ड विद नॉट विद स्टैंडिंग देयर. बेटा होल्ड का मतलब मेंटेन, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ऑल्दो. देयर फ्रेशनेस एंड ग्लॉसेस. ग्लॉसेस मतलब शाइनिंग. ऑल्दो दे आर वेट, स्टिल दे मेंटेन देयर ब्राइटनेस एंड देयर फ्रेशनेस. बीइंग रादर न्यू डाइड देन स्टेन्ड विद सॉल्ट वाटर. न्यूली कलर्ड लग रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहे हैं कि ये स्टेन्ड हैं. स्टेन्ड का मतलब स्पॉइल्ड हैं सी वाटर में. एंटोनियो बेटा पीछे से बोलता है, इफ बट वन ऑफ हिज पॉकेट्स कुड स्पीक. ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं ना, इसकी जेब खुद बोल रही होगी कि भाई मैं तो गीली हो गई हूँ, पर उसकी बात ही नहीं सुन रहा है. क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, कपड़े एकदम नए लग रहे हैं. इफ बट वन ऑफ हिज पॉकेट्स कुड स्पीक, वुड इट नॉट से ही लाइज. तो क्या इसकी पॉकेट खुद नहीं बोलेगी कि झूठ बोल रहा है, कि हमारे कपड़े बिल्कुल फ्रेश हो गए. पॉकेट खुद बोलेगी भाई मैं गीली हो रही हूँ. सेबेस्टियन, या or very falsely pocket up his report. बेटा falsely pocket up his report. report मतलब statement, और falsely pocket up का मतलब लिखो. pocket up का मतलब he will suppress. ये अपनी pocket की बात को suppress कर देगा, दबा देगा, बोलने को बोलने नहीं देगा कि actually हो क्या रहा है इसमें. ठीक है.